नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे द रोल ऑफ कैशिंग इन डॉट नेट। मैं डॉक्टर अमित चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमसीए डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से। कैशिंग एक टेक्निक है जिसमें कि हम वेब पेजेस को टेम्परेरीली लोकल हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं फॉर फ्यूचर यूज। और ये टेक्निक इम्प्रूव करती है हमारे एक्सेस टाइम को between the multiple users accessing the different websites simultaneously in the network, or a single user access multiple web pages multiple times, a single web page multiple times. So caching allows server-side web applications to scale better and improves the overall performance of the web applications. चलिए समझते हैं ये कैसे काम करता है। ASP.NET does not need to be executed every time to process the same request for the multiple clients or from a single client multiple times. एक ही चीज को बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। कैशिंग उसको अपने पास सेव करके रख लेती है और फिर कभी जब सेम रिक्वेस्ट दोबारा से आती है तो उस कैशिंग से उस चीज को, उस पेज को, वेब पेज को यूजर तक पहुंचा देती है और वापस उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। This saves the CPU cycles at the web server, resulting in improved response time. So caching is not a new technique, is not a new concept. It has been used successfully in various applications ranging from relational databases such as Microsoft SQL Server to various operating systems. ASP.NET provides a web cache to store web objects. तो ये ASP.NET में आपको प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी दी गई है कि आप अपना वेब कैश कहाँ पर डेवलप करें। यहाँ पर 3 जगह हैं जहाँ पर कि हम ये वेब कैश जो है अपना प्लान कर सकते हैं और वेब पेजेस को, हमारे वर्क को कहीं ना कहीं वो सेव कर लेता है और फ्यूचर में हमारे लिए उस कैश स्टोर से वो पेज प्रोवाइड करवा देता है। तो जिसमें सबसे पहली लोकेशन है क्लाइंट्स मशीन। So to provide improved performance, client applications like browsers perform caching by storing data from a web in temporary files on the hard drive or system memories of users' computers. Let us see this how can be done in the figure 1. Here in the caching is done at the client's machine. Individual client's machine have the local cache, and whenever the same user requests the same request, the page will be provided from the local cache, and this saves the web server CPU cycles and saves the access time and improve the performance. And the next location here is we can place a dedicated server for such caching in the network. Means these multiple clients are in the network and there is a common proxy server which will process their requests through the internet, through the web server, and the cache is also planned at the proxy server site, and this proxy server will serve the responses of the request for the different web pages by the clients. So caching can be performed on the server side so that the caches can be shared across multiple users on a network. Most administrators use proxy servers such as the Microsoft proxy server to store frequently used web pages on the hard disk. अगर यहाँ पर कॉमन सारी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही इंटरनेट और वेब सर्वर पर जाती हैं, अगर वो पेज प्रॉक्सी पर पहले से कभी डाउनलोड हुआ है तो वो पेज उस क्लाइंट को यहीं से सर्व हो जाएगा रिक्वेस्ट आने पर और इसको आगे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस डेफिनेटली सेव्स दी वेब सर्वर्स टाइम एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। अगेन देयर इज अनदर पोजीशन where we can store the cache is the reverse proxy. The proxy will serve the interaction of the clients, and reverse proxy is planned here for collecting the responses from the web servers or processing the requests
to the different web servers. If there is very much load in the network, if it is a big company, big organization, then there are both the servers, proxy and reverse proxy. So reverse proxy will collect all the responses from the different web servers, and if again the client request for the web page, either it will be found in the local cache of the client. If not found there, it will maybe found at the proxy cache, or if it is not found in the proxy cache, there may be the chance it will be available in the reverse proxy. We can plan the caching either on the proxy or reverse proxy, client or proxy, or only at the proxy level or only at the reverse proxy level. So these are the three positions we can plan according to our need, where we have to maintain the caching. Now let us discuss some of the most significant advantages of the web caching. Web caching reduce the bandwidth consumption because it will store the accessed web pages and provide it whenever we call for the same request for the same pages, web pages. It will be provided from the local cache, and that's why it will save the bandwidth consumption. And because the web pages is available in the local cache of the client or on the proxy cache, so it will definitely reduce the server load. And because we are providing it immediately from the cache, so the latency time, the response time will be reduced, and the system will be performing better than before. So these are the most significant advantages of web caching. This is all from my side on caching. Thank you.